आइटम नंबर 12 केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम एलओपी को बोलने बजट पर चर्चा। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम I yield to the LOP to say his words and then he'll yield to me. अभी केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण प्लीज आप सब बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। At least whenever the budget discussion starts, finance minister is needed. जीजू जी बैठे हुए हैं, वो नोट कर लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सारे नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। आ गई मैडम, आ गई। चलिए बता दीजिए। आ चुकी माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। खड़े होते हैं, टाइम मिलना चाहिए, ये प्रथा है। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that, ma'am. माननीय सदस्य अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए। मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज ना बोलो। नहीं, वो स्टूडेंट नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20-20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूं, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor. माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए हैं। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया
कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। No bullet train is coming. You refer to the real GDP growth, But Dr. Surjit Balla, one of your strongest supporters, has mocked the real GDP growth. That's because your CPI inflation is 0.5%, your wholesale inflation is negative, your deflator is only 0.5. With these numbers, you can always make a GDP growth. But the nominal growth has come down from 12% in 23-24 to 9.8% in 24-25 and 8% in 25-26. I'm glad the Honorable Finance Minister is there.
I'm pointing out, Madam, that your paragraph 14 of your budget speech is totally wrong and unacceptable. Yes, 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 yes. The last challenge, there are others who will touch upon the other challenges. No, you've got The 10 minutes slow left. fiscal consolidation. You can speak more. Now, fiscal deficit is a well-known measure, internationally accepted measure. I find that the government is moving away from fiscal deficit to debt to GDP ratio. Dr. Rangarajan, one of the most knowledgeable economists in this country, has pointed out that the two are interdependent. If fiscal deficit comes down, the debt to GDP ratio will also come down. The debt to GDP ratio comes down, the fiscal deficit will also come down. It's two sides of the same coin. I won't elaborate on that. The fiscal deficit in 25-26 is 4.4%. She has achieved her target. But next year, it will come down only to 4.3%. And the revenue deficit in the current year will be 1.5%. And next year also, it will remain at 1.5%. Now, what is the FRBM target? FRBM target is 3% of fiscal deficit. And the revenue deficit, the ideal is to eliminate the revenue deficit, but it can be up to 1%. At this rate of consolidation, which Dr. Rangarajan in a very analytical article has called out as a mockery. At this rate of fiscal consolidation, it will take 12 years to achieve the FRBM target. The FRBM target was last achieved only in 1 year, 2007-8, on the fiscal deficit. But since then, the fiscal deficit is ballooned, and then they're trying to bring it down. But at this rate of fiscal consolidation, it's like taking baby steps. Baby steps will not allow you to run 100 meters or 1,000 meters race. Yes. And then what saved the Honorable Finance Minister, not because of higher revenues, but because of higher financial discipline, what saved her was she cut total expenditure by 1 lakh crore, and the RBI gave a dividend of 3 lakh crore. Oh. That is how it saved the fiscal deficit. But for these cruel cuts in capital expenditure, but for the bonanza received from the RBI, the fiscal deficit will not be 4.4%, it will be 5.5%. Other challenges listed in the economic survey will be taken up by my learned friends. Now I'm looking for the Honorable Mr. Shivraj Singh Chauhan. I'm the Honorable Mr. C.R. Patil. I'm amazed. Under one minister's charge, under one minister's watch, agriculture and rural development, there is a cut in expenditure of 60,000 crores. Shame, 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 shame. Agriculture has been cut by 6,985 crore. Rural development has been cut by 53,067 crore. Shame, shame. Rural areas don't require any development. Shame. What is the minister doing? What are our officers doing? What are they doing throughout the year? That in 1 year, you spend 60,052 crore less. On a Gram Sadak Yojana, and villages are crying for Gram roads, 7,201 crore is the cut. On Awas Yojana, the much doubted housing scheme, the cut is 22,331 crore. Don't our people require roads? Don't our people require houses?
On grants and aid to states, the cut is 30,391 crore. You blame the states, but why don't you give them money? And there's not a word of explanation why this cut. Somebody in the cabinet, the Honorable Prime Minister must ask the minister and the ministry, why is there under your watch a 60,000 crore cut? Correct. I'm looking for Honorable Mr. C.R. Patil also. The Jal Jeevan Mission was allotted 67,000 crore. You know what they spent? 67,000 crore. They spent only 17,000 crore. What is this going on? And where is Jeevan? Why is there a budget?